Hello everyone, welcome to iExam B, and today I have come with a very good news for SEBI aspirants who have been wanting to prepare for SEBI Grade A exam, and I am going to give details about your preparation for 2023. Some of you may have already watched the video by Sushil Ragde sir telling you about the upcoming 2023 exam. The expected dates are now known, and therefore we'll waste no further time for your preparation. And stay with us in the session for a special gift for you all. What I am going to discuss in this session today is the expected dates for SEBI Grade A 2023 exam, the vacancies and the application trend that have been there in the past, and based on that what you can expect this year. What is the exam pattern for SEBI, what is the syllabus that you have to study, and most importantly, how to study it, and a 100 days plan that I am going to give you, a live class plan which will help you and prepare you well in time for your SEBI Grade A exam for 2023. If you have any questions, queries, any points for clarification or anything, please keep writing in the chat. I will keep addressing those and also discuss these patterns. So first, the expected date. As I was saying, Sushil Ragde sir has given the dates, has told you about the expected dates. He is never wrong. All those who are following us would know it very well. Sir gives the news only when he has some important information to share. So these dates he has shared today, and the dates for the expected dates, are in January, in the last week of January of 2023, those 27, 28, 29th January approximately, and this will be for your phase 1. And for phase 2, it will be in February, exactly 1 month after. So this is phase 1 expected date, and these are your phase 2 expected dates that are there for exam of 2023. So you have good amount of time if you judiciously and well in time you start your preparation. However, if you will waste time now also in knowing more details now, is this correct, is this not correct, क्या ये बात हम रिलाई कर सकते हैं, पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था कि एक साल में एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आ गया. अगर आप ये सब क्वेश्चंस में अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे, सो आप फिर से मिस आउट कर देंगे. बट इफ़ यू विल ट्रस्ट अस एज यू हैव ट्रस्टेड अस इन द पास्ट, you will well in time prepare for this particular exam. So अगर हम बात करें सेबी की, क्यों इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है इन आर कंट्री. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटर. कैपिटल मार्केट्स, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट्स in the world, and it has been growing year after year. This year we had one of the largest IPO. I'm sure आप लोग को पता होगा. If not, you can write in the comments box which IPO I am talking about. One of the largest IPOs took place in this year, and we have been at an all-time high also. And SEBI सिर्फ स्टॉक मार्केट्स, जब हम कैपिटल मार्केट्स की बात करते हैं, इट इज़ नॉट द ओनली markets that SEBI is looking at or regulating. It includes corporate debt markets, it includes commodity markets, it includes various entities, investment entities like mutual funds, alternative investment funds. So there's so much that our SEBI regulates, and its importance is only growing, and its regulation scope is also growing and only growing. Okay, so that is why it is a very important regulator, a very growing regulator. And if you want to understand and work in the financial markets regulation, this is the best place to work, and a very good institute, because it gives you a very professional environment to work, and not like a bureaucratic organization, but a very professional organization. And they recruit at the grade
A level, right? So grade A level पे recruitment होता है इनका, हर साल हो रहा है. अगर मैं पिछले कुछ सालों का trend देखूंगी, in 2017, and these are the general vacancies that I am talking about, general stream. इसके अलावा there are other vacancies for legal, IT, which I will also show you how they also happen. But if I talk about the general stream vacancies only, they have been growing over the last they have been in large amounts. Overall, Securities Exchange Board of India, SEBI, is a relatively small organization, and 80 is a very, very good number for general streams to come out every year. So 2018 they had is when the consistency and the increase in the recruitment started. After that they came out in 2020, then in 2022, and actually you will say this is only 1 year gap, because 2021 was lost because of the COVID. And now in 2023, exactly 1 year, this exam also happened in March, and now we are expecting dates is Feb. So in a year the new recruitment cycle is coming. Let's see the trend. What has been the trend in the past? If I see in for 2022, अगर 22 की बात करें कि कितने पोस्ट थे, कितनी एप्लीकेशंस आई थी, कितने स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था, then these are the actual factual numbers for you. Just let me ask Hindraj. Yes, the largest was LIC's IPO that came out. Niranjan, we have noted your request. We will be doing a lot of seminars related to various subjects, how to prepare, how to do your preparation, and even I will cover in our 100-day plan, which we'll be covering. So Niranjan, please wait till the end of the session. Yes, Hindraj, that is exactly what I am going to discuss about the live classes session that is going to be started by iExamB. Okay, so if I talk about the 2022 vacancies and the application trend, there were 80 vacancies for general. जो मैंने आपको last slide में दिखाया था वो सिर्फ general category की vacancies थी, but vacancies और भी streams में आती हैं, बहुत important, legal, IT, रिसर्च, राजभाषा. तो ये रेकरिंगली आपकी स्ट्रीम्स हैं जिनमें वैकेंसीज आती रहती हैं, एंड लीगल भी बहुत इंक्रीज होती जा रही है. उसका भी अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो फ्रॉम लेस दैन सिंगल डिजिट वैकेंसीज अभी ये डबल डिजिट वैकेंसीज होने लग गई हैं. सो लीगल डिपार्टमेंट भी बहुत इंक्रीज हो रहा है सेबी का. IT इज़ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैकबोन. एंड इनफैक्ट इस साल 2022 में जब रिक्रूटमेंट हुआ था ओनली 2 people गॉट थ्रू. सो यू कैन इमेजिन दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट द राइट कैंडिडेट्स गेटिंग. तो आपको प्रेपरेशन अपनी अच्छी करनी है, कंपटीशन से बेटर करनी है, एंड इवन टू अ लेवल दैट यू कैन वर्क विद अ रेगुलेटर. इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी वर्किंग विद एपेक्स इंस्टीट्यूट्स इन आवर कंट्री, right? So we have to make ourselves capable to be able to work in such organizations and actually contribute in the working of these organizations. तो ये क्योंकि recruitment कम थी तो IT का एग्जाम इनफैक्ट अभी होने वाला है. द रिक्रूटमेंट साइकिल न्यू वैकेंसीज वर अनाउंस्ड, सिंगल ईयर में 2 बार वैकेंसी आई IT में, एंड अभी उसका एग्जाम अगस्त लास्ट वीक में है फॉर फेज 1. सो SEBI is very serious about recruiting. Now is your chance कि आप serious हो कि नहीं उसके grade A officer बनने के लिए. नहीं तो lot of effort has to be put in, but अगर वो effort आप ठीक time से देंगे तो वो effort नहीं लगेगा, it will be fun. So selection process, people who may not be aware कि कैसे होता है एग्जाम, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे इन डिटेल कि सिलेक्शन प्रोसेस 3 phases में होता है. फेज 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, इट्स अ एग्जाम MCQ बेस्ड. फेज 2 इज अगेन MCQ बेस्ड एग्जाम. But in your final selection इसके 85% marks जुड़ते हैं, and then the last phase is your interview which has a 15% weightage in your final selection. phase 1 में आपके 2 papers होते हैं. 2 papers are there. Paper 1 is your aptitude test consisting of quant, reasoning, English and GA. General awareness with focus on financial awareness, right? So what we mean by that is financial markets में क्या हो रहा है, economic news क्या है, financial news क्या है, what are the regulators doing, what is the government doing in the financial markets.
So all that focus is there. So that does not mean there will be no other general awareness questions. There will be, but the focus is only on financial awareness. Paper 2 की अगर हम बात करें, general stream, I am discussing this for general stream. Paper 2 में 6 subjects होते हैं, but there is no segregation per se. आपके syllabus में 6 subjects include किए जाते हैं. First is your commerce and accountancy, इसको मैंने short में यहाँ accounts लिखा हुआ है. Second is your finance, then costing, companies act, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. तो ये आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं. फेज 2 की अगर मैं बात करूं, अगेन देयर आर 2 पेपर्स दैट हैपन. पेपर 1 इज योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश विच इज चेकिंग योर राइटिंग स्किल्स. ओके, इट हैज अ 1/3 वेटेज. पेपर 2 की अगर बात करूं, इट इज द सेम एज दिस पेपर which was there in phase 1. So आपका paper 2 is same in both the phases. थोड़ा सा level of questions differ करता है, but syllabus exactly same है. So that is the best part. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग अलग पढ़ना है दोनों phases के लिए. आपको same चीज़ पढ़नी है, बस depth थोड़ा सा types of questions differ कर जाते हैं. Otherwise everything is same. और इसका आपका 2/3 weightage होता है phase 2 में. इंटरव्यू आपका एक पैनल इंटरव्यू होता है जिसका आपको 15 में से मार्क्स दिए जाते हैं, एंड दैट इज अगेन एडेड टू योर फाइनल सिलेक्शन. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फेज 1, एग्जैक्टली फेज 1 में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, क्या मार्क्स होते हैं. सो फेज 1 जो पेपर 1 है आपका, in that you have questions related to quant, reasoning, English and general awareness, as I said, with focus on financial sector of easy to moderate level. This is a total of 100 marks. लेकिन जो questions होते हैं वो आपके 80 questions होते हैं, 20 each. Okay, 20 from each of the topics. However, the best part in SEBI exam as compared to any other regulatory body exam is there is no sectional cutoff. ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हु आर स्केर्ड ऑफ से क्वांट, या बहुत होते हैं जो हु आर स्केर्ड ऑफ रीजनिंग, और मे बी देर आर स्टूडेंट्स हु आर गुड एट क्वांट एंड रीजनिंग बट दे आर नॉट वेरी गुड एट जनरल अवेयरनेस एंड दे आर स्केर्ड अबाउट दैट. सो यहाँ पे आपका चांस है, दिस इज वन एग्जाम वेयर यू कैन प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स बिकॉज देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ. सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Okay, so and when I talk about paper 2, as I said, you have questions from different topics of commerce, accountancy, management, finance, costing, companies act and economics. 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 100 मार्क्स के लिए आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चन. सो ओनली 50 क्वेश्चंस फ्रॉम सो मेनी सब्जेक्ट्स. सो स्टडिंग स्ट्रैटेजिकली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ऐसा नहीं है आपके 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ अकाउंटेंसी के पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स के पूछ लेंगे. इट विल बी अ गुड मिक्स, राइट. सो स्टडिंग स्ट्रैटेजिकली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें सब कुछ कवर करना है, बट इन अ मैनर वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स so that we can attempt any kind of questions, and we practice numericals to cover the entire topics that are given in the syllabus. Another very important point that you should be aware about is the cutoff. 30%, 40% and aggregate 40%. These three things you have to keep in mind. Paper 1 में no sectional cutoff. No sectional cutoff है, लेकिन आपको 100 में से minimum 30 marks चाहिए, मिनिमम, राइट. देन पेपर 2 में आपको 100 में से मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, बट इफ यू ऐड दीज टू, if you get only the minimum marks, it is 70. However, I need an aggregate of 40%, which means you need 80 marks in total. That means only getting minimum marks in 2 papers will not help you. So you need to get additional 10 marks at least from somewhere. Now this can be from here, it can be from here, it could be a combination of both. However, you need to get this. And where, like I had explained you before, if you will see how many people have cleared phase 1, there is a very big number of people who clear phase 1, almost 9,200 or 10,000 people clear it. And the reason behind that is because
the cutoff is generic, it is not merit based. So सेबी एग्जाम का एक और फायदा जो है, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो मेरिट बेस्ड नहीं होती है फेज 1 में, वो आपकी फिक्स्ड कट ऑफ है। 30% आपको मिनिमम पेपर 1 में चाहिए, 40% मिनिमम आपको पेपर 2 में चाहिए, एंड इन दोनों में एग्रीगेट मिला के आपको 40% चाहिए। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। स्टिल पीपल आर लूजिंग इट, वाई? क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो ठीक से समझते नहीं है इंपॉर्टेंस, क्या चीज़ उनको प्रिपेयर करनी चाहिए, एंड दे मिस दिस आउट। तो हमें मिस नहीं करना है, वी हैव टू बी इन द number of students who clear phase 1. Okay, I will take up the queries after discussing this exam pattern for phase 2, all these queries that you have sent in the chat. So now if I talk about the phase 2, as I told, इसमें भी दो papers होते हैं। Paper 1 is your English paper where the drafting skills are tested। 100 marks का होता है, 3 questions आते हैं आपके इसमें। एक, you have to write an essay, another is a précis that you have to write, and the third is a descriptive reading comprehension based questions that you have to answer। Paper 2 is same as phase 1। तो आपका पढ़ाई वाला काम हो गया है फेज 1 की प्रेपरेशन करते हुए। फेज 2 में आपको अब क्या करना है, उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, 1 नॉच अप जाना है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, एंड दैट इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर फेज 2। सो very very easy paper, very easy preparation if you keep all these golden words in mind. Okay, so now let's come to syllabus, but before I come to syllabus, I'll just take up the various queries that you have sent in the chat. Okay, so general category, Hindraj, generalist or general category, what I mean by is the vacancies are for general post at okay, and so this will include that, and I'm not talking about unreserved kind of category here, it is for the generalist post in SEBI. Okay, so DA is asking about the Companies Act. I will specifically answer here, but later sessions I will be discussing topic wise also what should be your strategy for your preparation. We will be doing actually a lot of webinars. So if you want to be a part of those, there's a Google form that will be available in the description of this particular session. So please do fill up that so that you can be a part of the webinars that we will hold for the subject wise strategies. So DA is asking about the Companies Act. Do we have to read full or specifically mentioned in the syllabus? You have to concentrate on the 7 chapters that have been mentioned in the syllabus. Anything supporting those points like the introductory chapter or just a simple statements given in chapter 2 related to what is MOA, what is AOA, or how the incorporation important documents are there. So generic things we can cover, but apart from that you don't have to do the entire Companies Act. You have to concentrate on those 7 chapters that are given in the syllabus. Okay, management book to be referred, DA, again this is your personal choice. You can refer to any particular management book, or you can refer to your own notes or iExamB's course. The idea behind management and the trend of questions that have been coming in management is again understanding and application. Okay, so you should rather than focusing on just learning up the theories, your focus should be on understanding what that theory is saying. Say for example, if you're talking about a Maslow theory, so rather than just learning up कि Maslow theory क्या होती है, वो क्यों बनाई गई थी, क्या उसमें रैशनल था, वो क्यों यूजफुल है, ये सब समझना ज़रूरी है ताकि आप उसको अप्लाई भी कर पाएँ. अभी जो क्वेश्चंस मैनेजमेंट में पूछे जा रहे हैं इन द लास्ट फ्यू एग्जाम्स दैट हैव हैपेंड, उनके क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से निकलते हैं अबाउट द टॉपिक दैट यू हैव स्टडीड. सो यू कैन रेफर टू any management book, LM Prasad, SP Robbins, whichever you find easy to understand. It is about mulling over those topics. एक बार पढ़ने के बाद उन theories को आपको उन management concepts को समझना पड़ेगा, उनको कैसे apply किया जाता है. Sectional cutoff, Bharat, I have discussed in detail. I hope I have answered your question. Okay, so DA again, as I said, it will be better अगर आप webinars के लिए attend करें, because every topic, every subject that you have asked, we will discuss in detail क्या approach हो सकती है. Okay.
ओके, सो हिंदराज, अबाउट द ब्रेक्स, सी ब्रेक ऐसा कुछ नहीं है कि बैड है या गुड है, इट इज़ अबाउट हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड यूज इट स्ट्रैटेजिकली। अगर आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने में वेस्ट कर देंगे तो ऑफकोर्स द ब्रेक इज़ बैड, लेकिन अगर आप उसको जुडिशली यूज़ करेंगे, टाइम को अच्छे से स्पेंड करेंगे, यू एक्चुअली यूज़ दैट टाइम टू understand things and perform, increase your performance, so it's a good, so it is subjective on how you use that break. uh, okay, finance ke liye I have already told you, DA, I will do a detailed discussion about it. You can go for कॉन्सेप्चुअल टॉपिक वाइज आप देख लीजिए, पूरी भारतीय पाठक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखिए, कोई भी इन सब सिलेबस के लिए आपको पूरी पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन पिक अप द सिलेबस टॉपिक्स एंड स्टडी फ्रॉम एनी बेसिक बुक्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन। सो आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से, एंड देन यू हैव टू स्टडी। यू अगर आप अकाउंट्स की, फाइनेंस की, कॉमर्स की बात करते हैं, एनसीईआरटी बुक्स को भी आप रेफ़र कर सकते हो, आईसीएआई की बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हो, बट rather going into every detail on the book, you have to pick and choose and use well. प्रशांत, yes, BPDI is enough for your preparation of GA. GA आपका डायरेक्टली फेज़ 1 में पूछा जाता है, लेकिन पेपर 2 में भी वो हेल्पफुल होता है, बिकॉज देयर कैन बी सम क्वेश्चंस विच एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली कम आउट फ्रॉम द न्यूज़, तो वैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो BPDI इज़ वेरी गुड इनफ, बिकॉज उसमें हम लर्न अलॉन्ग में आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो उससे फ्रेम हो सकते हैं वो भी वी कवर। सौरभ, एज आई सेड, एनी बुक्स यू आर कंफर्टेबल रीडिंग, जो आपको सारा सिलेबस पॉइंट से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे सकती है, इज़ गुड इनफ, सो यू कैन रेफर टू द बुक्स दैट यू फाइंड कंफर्टेबल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. The only thing is they should be as per the syllabus you are covering, and you're not wasting too much time in trying to cover too many peripheral topics. Okay. Will they consider me in terms of merit, or will they give very bad marks in interview? ओके, सो नो हिंद, ऐसा कोई बायस या प्री कंसेप्शन इंटरव्यू के टाइम पे पैनल के माइंड में नहीं होता है, ये सिर्फ आपके माइंड में होता है, एंड जितनी जल्दी आप इसको अपने माइंड से हटा दें उतना बेटर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी खुद की प्रेपरेशन पे। आई एम ट्राइंग टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, अभी हम लोग बहुत मॉक इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आरबीआई के आर इन प्रोसेस, इससे पहले हम सेबी के हम लोग ने कंप्लीट किए थे, ईसीजीसी के अभी चल रहे हैं, ईपीएफओ के हमने किए थे। सो ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस वी आर डूइंग इन मॉक इंटरव्यूज़ एंड इंटरव्यू गाइडेंस सेशंस फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ व्हाट आई कीप रिपीटिंग एंड आई एम टेलिंग यू, पैनल के माइंड में कोई बायस नहीं होता है, दे हैव नो प्री कंसीव नोशंस अबाउट your gap years, about your previous preparations, about your degrees or anything. They work like a blank sheet. It is about how you present. तो आपको अपने माइंड से अपनी कोई भी बायसेस जो हैं, अपनी कोई भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको आपको हटाना पड़ेगा, एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। आप इनको हटाइए एंड गो विथ कॉन्फिडेंस, नथिंग स्टॉप्स यू, बट इंटरव्यू से वरी करने से पहले आप अपने रिटन एग्जाम के लिए वरी करिए एंड उसके लिए प्रिपेयर करिए, एंड वरी नहीं करना है, प्रिपेयर करना है। ओके Okay, so Hind, now this is a very typical question. Before the news about notification, we are asking about completion कितना होता है. See, I already told you कि एग्ज़ाम आपका जैन में होगा, उसके एक महीने बाद फेज़ 2 होगा, उसके अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ में रिजल्ट आ जाता है, उसके 15 डेज़ के बाद अप्रॉक्सीमेटली इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होता है, अप्रॉक्सीमेटली इट टेक्स अ मंथ इंटरव्यू होने में. सो आप अगर पूरी साइकिल की बात करें, नोटिफिकेशन से लेके फाइनल सिलेक्शन लेटर तक आने में 4 to 5 मंथ्स लग जाते हैं. ओके, लास्ट ईयर नोटिफिकेशन आया था थर्ड या 4th ऑफ जनवरी को, एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, एंड जो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आई थी वो 2 ऑफ जुलाई को आ गई थी, राइट. सो अराउंड दिस मच टाइम लगता है उसमें. अब अगेन वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन नॉन essential points related to our preparation. The thing that is in your hand is preparation, and उस पर आप concentrate करेंगे तो आपका break भी useful होगा and आपका result भी अच्छा होगा.
सी प्रशांत, अगेन बीपीडिया में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. आप सेबी एग्जाम में मेजॉरिटी आप फोकस कर सकते हैं बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक वाले एस्पेक्ट्स पे, बट बीपीडिया में जो अदर थिंग्स दी होती हैं वो भी आपको अवेयर होना होगा, बिकॉज इट फोकसेज ऑन फाइनेंशियल सेक्टर बट इट इज़ नॉट 100% फाइनेंशियल सेक्टर. तो 20 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें से आप इजीली बोल सकते हो 50% अराउंड 9 to 11 क्वेश्चंस फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड होते हैं, एंड जो अदर बाकी क्वेश्चंस है जनरल अवेयरनेस, लाइक अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, राइट, बुक्स एंड ऑथर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो दैट इज वाई आई एम सेइंग BPD is sufficient for your preparation, including all the different segments, because BPD में सिर्फ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज़ नहीं होती, वी कवर ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज़. Okay. Muchiro, for your question, as I said, I will do separate sessions, so please fill in the Google form in the description box for this. Okay, सेबी आप आज से स्टार्ट कर लीजिए श्रेया, that will be good enough till your exam in January. Okay, so this is the syllabus for paper 2. पेपर 1 के लिए कोई सिलेबस नहीं दिया जाता है. QRE, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में आपको जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं वो आपको पढ़ने होंगे फॉर एप्टीट्यूड पेपर्स. पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली सिलेबस दिया जाता है. 6 सब्जेक्ट्स एज आई टोल्ड, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आपको अकाउंटिंग, हाउ, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, हाउ इज इट यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू स्टडी. Then the standards, accounting standards related to certain topics. आपको सारे accounting standards नहीं पढ़ने हैं, आपको यहाँ पे accountant नहीं बनना है. देखिए ये सारे subjects का mixture इसलिए होता है so that you have understanding of certain things that will help you in your job. Okay, आपको यहाँ पे कोई भी specialization नहीं करनी है. मैं यहाँ पे eligibility की आज बात नहीं करी है. eligibility की अगर हम बात करें तो bachelor's in engineering, या फिर बैचलर्स इन लॉ, या फिर आपने कोई भी मास्टर्स डिग्री करी हुई है, या आप CA हैं या CS हैं या CFA हैं, तो आप एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, राइट. सो different kind of people are eligible for giving this exam. तो आपको कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनना है. एक फियर होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है तो CA वाले स्टूडेंट्स ही पास करेंगे, या फिर CA स्टूडेंट्स के लिए ही ये एग्ज़ाम है, या फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम है. दैट इज़ अ वेरी वेरी इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग इफ़ वी आर गोइंग बाय दैट. ओके, सो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नॉट जस्ट फॉर इंटरव्यू, वी हैव टू कम आउट ऑफ बायसेस. हमें अपनी प्रेपरेशन करने से पहले ही बायसेस क्रिएट नहीं करने हैं दिमाग में कि ये चलता है और ये इसको प्रेफरेंस दी जाती है, उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाती. ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रेफरेंस नहीं दे रही है, आप अब ज़बरदस्ती प्रेफरेंसेस अपने दिमाग में बना रहे हैं. ओके, एंड अपने ही चांसेस फिर रिड्यूस कर रहे हैं वो प्रेफरेंसेस को सही मान के. सो यू हैव टू रियली कम आउट ऑफ दैट, फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड प्रिपेयर. ओके, सो ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं. ओके, आपके पास अगर एग्जाम के क्वेश्चंस भी होंगे, आई विल डू मोर सेशंस. ओके, आज एक ही सेशन में सब कुछ नहीं कवर हो पाएगा, सो वी विल डू मोर सेशंस वेयर आई विल शो यू कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं ऑल द 6 टॉपिक्स में इन द पास्ट, एंड आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं, कहाँ पे करने हैं, कहाँ पे नहीं करने हैं. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स विल बी covered. So this was the syllabus. मैनेजमेंट में भी 6 टॉपिक्स हैं, फाइनेंस में भी आपके 3 टॉपिक्स में उन्होंने सब डिवाइड करके कोर्स दिया हुआ है, कॉस्टिंग में 3 टॉपिक्स में उन्होंने सब डिवाइड करके दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट में ओनली 7 चैप्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं आउट ऑफ द 27. देखो टोटल ना 29 चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट में, आपको सिर्फ 7 पढ़ने हैं. इतना छोटा सिलेबस है. ओके, इकोनॉमिक्स में भी बहुत की पॉइंट्स हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना है. सो इट लुक्स ह्यूज, इट इज़ नॉट ह्यूज. ओके, सो नाउ what is the gift for you from iExamB? This special Teachers Day, we are going to make it special for you to help you unfold your own potential. As I was telling you, iExamB पे we are not focused on cramping you with information. We are focused on
helping you take out your own potential so that you shine. You shine in the written exam, you shine in the interview stage, and you shine in the organization that you become a officer at, right? So it is about you unfolding your potential and how we can help you in that journey of yours. So this Teachers Day, a very important present for you from iExamB. We are going to start our 100 days live class schedule from the 5th of September 2022 for your preparation for SEBI Grade A 2023 General Stream. It has been planned in a manner to comfortably complete all the topics, guidance related to all the topics for your preparation for SEBI Grade A 2023, covering paper 1 for both the phases, covering paper 2 for both the phases, covering all the 6 subjects of paper 2. Okay, you will be able to download that from the description box of this session to give you a glimpse of how it has been structured. So we start, as I say, day 1. We start on the 5th of September, Monday, the Teachers Day, where we will take an intro session about your preparation for your SEBI Grade A 2023. We will then jump into the preparation of various subjects, both for paper 1 and paper 2. So every day one paper 1 topic and one paper 2 topic will be covered for you, including reasoning, English, general awareness, descriptive English, and your quant and your accounts. So accounts में initially हम कुछ टाइम, क्योंकि एक ही दिन में हमने ऐसा नहीं किया है कि आपको हर दिन एक क्लास एक सब्जेक्ट का 6 डेज हम कंफर्टेबली कर सकते हैं, नहीं, बट हमारा फोकस है कि आपको समझ में आना चाहिए. सो 2 days कंटिन्यूसली इनिशियली टू गेट यू कंफर्टेबल विद सर्टेन सब्जेक्ट्स. हमारी क्लासेस होंगी to give you a brief about accountancy. Then we go on to finance to understand the financial markets, the capital markets, and then to understand costing. क्या होता है costing, क्यों पढ़ना है, and the entire overview and the key concepts in that. After that, we move a little lighter subject, management, because management is like a story. Okay, it is not a story, but you should study it like a story. Okay, आप जितना उसको absorb करेंगे, absorb करने का मतलब होता है रट्टा मत मारिए. Please don't mug, please don't try to mug up things and trying to just not understand why these are actually very practical approaches that will help you once you become a grade A officer. You will remember, okay, this is what leadership, this is why they were talking about this, okay, this is what the meaning of motivation is. It actually works, right? तो वो आपको practical experience आप खुद experience करोगे जब आप start कर दोगे work. And if you are a working professional, maybe you will be able to correlate to your existing times. So उसको आप एक story की तरह absorb करिए. Okay, and similarly like this, we will have sessions divided for various subjects in our paper 2. First we will focus on understanding the rules and the concepts wherever required. Later on we will move, once we have established those, we will have separate specified sessions for practicing of numericals. इन सब classes में भी जहाँ पे भी numerical topic होंगे हम आपको उसके साथ साथ करेंगे. We will also have dedicated classes for practicing numericals, for accounts, for costing, for finance wherever required, for economics wherever required. So all this will be included. Okay, and the faculties that are going to be there working for you round the clock all 7 days for you will be present to you will be QRE and GA related Karan Sardana sir. He's an expert in quant, high level, moderate level, easy level. Any exam you talk about, his students have cracked so many exams, I think he has even lost count now. Anshul sir is government official and an expert in reasoning. He makes reasoning so much fun that all those students who were scared of puzzles and in the past actually now find it so much fun. Sushil Ragresh sir, I don't think he needs an introduction. He's been a mentor and guide for hundreds and thousands of students over the last over decade and continues to be so. Amit Parhi sir and Tushar Saha sir, experts in GA. They've given various exams, understand the pattern, what kind of news is important for GA exams. They are expert in filtering that out. Satakshi ma'am, our English expert.
to guide you all kinds of objective questions and descriptive questions related to English. For your descriptive English, we have Dr. Sharma, XEGM, RBI, an expert, PhD in English, and Arunima Sinha Man, again being guiding for various government exams over the last 1 decade. Her USP, I will say, is उनकी यूएसपी की अगर मैं बात करूं, वो इंग्लिश भी इतनी अच्छी से हिंदी में आपको समझाती हैं कि आप भूल जाएंगे कि आप हिंदी कि आपको इंग्लिश से कभी डर भी था. सो शी इज़ एज सो गुड इन एक्सप्लेनिंग. सो these are going to be your guides for paper 1 in phase 1 and phase 2. If I talk about phase 2, our experts for various streams, whether it is general stream, legal stream, research stream, IT stream, or Rajbhasha stream, we have experts from all the streams, and all these people have actually years of industry experience of cracking exams, giving exams, working in these organizations, and guiding you for years now. So it's not one hat that fits all, that एक ही टीचर आपको सब कुछ पढ़ा रहा है. We have separate experts for economics, finance, for accounts, for costing, for management, so that you have a holistic understanding and your potential is unfolded, and you are not just preparing for one exam, but you are preparing for a career to be made ahead. So that is what are all these faculties will be involved. I gave you a glimpse of the first 20 days. This is about the last 20 days, which we will comfortably finish on the 19th of December, when your notification may come out and you can focus on your own revision, mock test, practices, and everything for your exam in January and February. You will be, as I said, you will be able to download the PDF, so don't worry about the PDF. If you want to avail be a part of this journey with us for 100 days, the course is as of now available at a flat 50% off. You can use the coupon code B50. Okay, I'm again looking at the questions now to answer your queries. ओके, सेबी वेबसाइट से कुछ पढ़ना है, आप अपडेट्स लेते रह सकते हैं. सेबी ने क्या नए रेगुलेशन सर्कुलेशंस कराए, सो हम वो सब भी डिस्कस करते हैं क्लासेस में. टॉपिक से जो भी रिलेटेड होता है, वी डिस्कस एनी न्यू चेंजेस विच सेबी इज प्रपोजिंग. डायरेक्टली एग्ज़ाम के लिए आपको पूरी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड if you are self preparing to understand the organization as much as possible. Interview stage पे yes, we do recommend directly कि आप annual report पढ़िए, आप key function समझिए. So it is a good idea to know about the organization. Repeating again, exam purpose से आपको directly सब कुछ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. DA, it is the live class schedule is not free. It is a part of the course because हमारे जो भी courses होते हैं, live classes is a part of it. So if you will look at it, there are live classes, there are practice questions, there are study material, and these study material are actually downloadable. So बहुत सारे students को पेपर फॉर्मेट में पढ़ना अच्छा लगता है. सो फॉर देम दीज आर डाउनलोडेबल, आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस, 10 to 15 मिनट्स की वीडियोस होती हैं जो आपको स्टैटिक फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट पे दे देती हैं, राइट. सो यू कैन ऑल्सो वॉच दीज वीडियोज. सो ऑल दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द कोर्स. ऐसा नहीं है कि दिस इज live class schedule is separate. It is not separate. It is the part of the entire course which includes live classes, and we are starting new classes for 100 days for 2023 preparation. And आप interview stage पे अगर आप पहुँचते हैं तो आपको interview guidance भी मिलेगी. Okay, so that is the entire package. Yes, so Hind, as I said कि full-fledged कोर्स है ये. इट इज़ नॉट वन पार्ट, द इंटायर कोर्स. तो ऐसा नहीं है कि लाइव क्लासेस हम कर रहे हैं तो आपको और कुछ मटेरियल नहीं मिलेगा. ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट ऑफ वीडियोस में भी मिलेंगे, आपको पीडीएफ्स में भी मिलेंगे. सो आप अपनी पेस पे भी पढ़ते रह सकते हैं, एंड क्लासेस के साथ उसको सपोर्ट या सप्लीमेंट करके अपनी पढ़ाई को और डीप बना सकते हैं.
यस हिंद, एब्सोल्युटली यू कैन टारगेट बोथ ऑफ देम. काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं सेबी और आरबीआई की प्रेपरेशन में, एंड हमारा आरबीआई की क्लासेस ऑलरेडी आर गोइंग ऑन ऑल्सो. सो जो क्लासेस में कम इंक्लूड होगा, यस आपको बीपीडिया पढ़नी होगी प्रशांत. एज आई एम सेइंग, क्लासेस करने का ये मतलब नहीं है कि आपको और कुछ नहीं करना. आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको पीडीएफ को रेफर करके पढ़ना पड़ेगा. ओके आप अपनी पेस पे भी पढ़ सकते हैं. इन क्लासेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आप पहले से, क्योंकि ये सब कंटेंट जो है आपके क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस, ये सब आपके कोर्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है. तो आप क्लासेस में अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए, उसको इंटरेक्टिव, उसको अपने लिए और यूजफुल बनाने के लिए इन सब को देख के पढ़ के पहले भी आ सकते हैं, विच विल हेल्प यू टू पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड बेटर, टू इंटरेक्ट, टू आस्क योर डाउट्स, बिकॉज यहाँ पे फैकल्टी आपके सामने अवेलेबल होती है लाइफ में, जिनसे आप पूछ सकते हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. यहाँ पर आप अपनी क्लैरिटी चाहिए, आप एक नॉच आगे जाइए एंड अपनी फैकल्टी के एक्सपीरियंस को यूज़ करिए. ओके, इट इज़ अबाउट यू पुशिंग अस. आप जितना हमसे पुश करेंगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा. इट इज़ अबाउट शेयरिंग द नॉलेज. No, Sonu, we do not have any test series course because it is not required. You can go on our website. आपको mock test free मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेबी के लिए भी हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस फॉर्मेट में मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू पे. यू कैन अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू कैन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फॉर फ्री. सो देयर इज नो टेस्ट सीरीज कोर्स बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. आपको प्रैक्टिस करना है फ्रीली. आई एग्जाम की वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं. So that is all for the session today. If you have any more queries, you can call on this number 920-552-4028. You can also write to us at hello@iexamb.com. And also, as I suggested, you can fill up the Google form if you want to be part of the webinars which we will be holding soon, related to the strategy of each of the 6 subjects and how to prepare for them. If you have still not subscribed, I am please requesting you to subscribe to the channel so that you get to know about the upcoming sessions, discussions, valuable information related to your preparation. Thanks everybody. That will be all for today. We will see you soon for more points related to your SEBI preparation. Hind, it is an MCQ objective paper. Only the descriptive paper is descriptive English in phase 2. That is the only descriptive paper. Otherwise, all papers are objective MCQ based in SEBI. Okay. Thank you everyone. Have a good day.